थोड़ी देर चित्त को समाहित करने का अभ्यास करते हैं, फिर रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे. We sit silently for some time and develop samahit chitta. If you want to do it with walking meditation, that also is fine. कोई चित्त में अर्जेंट बात हो जो पास्ट में हुई है, भविष्य में होनी हो, we just put it aside for the 45 minutes of our session. Consciously we put it aside and then practice.
Though we have put aside at the beginning something which is urgent, it's very likely कि वो फिर मन में आ जाएगा. Just look at it in a relaxed manner and come back to the Kammatthana, whether it is the breath or the soul sensations or whatever else. मन में विचार आए तो उसमें हम प्रतिक्रिया ना करें, वो बहुत आवश्यक है. ट्रैंक्विलिटी के लिए बहुत आवश्यक है, प्रतिक्रिया ना हो.
We can now begin our reflective meditation. कल हमने डिस्कशन को यहाँ पे रोका था कि प्रिय वेदना को क्या हम दुख देख पाते हैं? प्रिय वेदना को दुख देखने का तात्पर्य क्या है? कल शाम को भी कुछ इस पर चर्चा हुई थी। यदि आप में से कुछ और अपने रिफ्लेक्शंस ऐड करना चाहे, so you're welcome to tell me before I give some references to suttas. Sir, I could observe like in the same person है या whichever जिस तरह का पहले था, it was all depending on how the person is in coordinates with my view or लाइक जो पहले जिसे देख के प्रिय वेदना होती थी या प्रेजेंट था जो, तो वो किस लिए था वो समझ में आया कि जिस तरह से कहा गया या जिस तरह का मेरा व्यू था वो उस हिसाब से था, तब तक वो प्रिय लगा। फिर देन द बिहेवियर जैसे चेंज हो गया सामने वाले का, तो वही सुखद वेदना फिर दुखद में कन्वर्ट हो गई, ये एक रियलाइज हुआ। और उसी तरह शरीर में भी अगर हम कुछ जैसे कोई नई चीज शुरू करते, कोई नया एक्सरसाइज शुरू किए या इस तरह का कुछ किए जिससे प्रिय वेदना ही लग रही है, बट एट सर्टन टाइम वो अगर हमने एक्सर्शन हो गया उससे, तो द सेम थिंग, वो सेम जो ठीक लग रहा था ना, वी डोंट फील लाइक, वो दुखद में कन्वर्ट हो गई। तो वो उसका जो अनित्य पैटर्न है और जिस तरह का चेंज हो रहा है वो दैट आई कुड नोटिस। सर आई नोटिस कि प्रिय वेदना जब आती है तो मतलब पहली बार तो माइंड उसमें इंडल्ज कर ही जाता है, एंड देन देयर वर आल्सो सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे कि प्रिय वेदना पे पहले के बेसिस पे पहले रिफ्लेक्शन की है या किसी तरह अपनी संज्ञा चेंज हुई है, तो उन केसेस में जब प्रिय वेदना जागती है और मन इंडल्ज होने लगता है तो बड़ी जल्दी उस पे चेक लग जाता है, एक रिमेम्बरेंस हो जाती है कि ये हमने पास्ट में भी देखा है, इसकी परिणति, इसका कन्वर्जन दुख में ही है या ये एक दुख के दो साइकिल्स में बीच में ब्रेक है। बट अगेन द पावर ऑफ द प्रिय वेदना और सुखद वेदना इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग टू कैप्चर द माइंड। Good, thank you very much. सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर जैसे कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ पहले दुखद हुआ, कई बार फिर सुखद हुआ, तो वो जो एक मन में था कि हाँ ये होता है, तो उससे पहले इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता था। तो जैसे जब उन्हें गौर करना स्टार्ट किया तो ऐसे लगा कि जब सुख का टाइम चल रहा है तो वो दुख वाला टाइम याद आता है कि ये जो सुख का टाइम चल रहा है 101% ये दुख में बदलेगा, ये उधर जाएगा और वही वो समय आएगा। तो ये जो सुख था इसमें समता बनी रही दुख के कारण, दुख को याद करके कि हाँ वो भी समय आएगा और ये हमेशा, ये इम्परमानेंट है, परमानेंट है नहीं। तो इसी प्रकार सर कल तो दिन में बहुत कुछ इस तरीके
मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। कल शाम को जब वो हमारे कजिन को मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा के शाम को उसके साथ बातचीत कर रहा था, एंड वी वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। बहुत ही खुश हम दोनों थे और खूब हंसी मजाक हो रहा था। इतने में डॉक्टर आ गया, एंड द डॉक्टर देन डिस्क्राइब्ड हिज ailment in details, and immediately that entire thing changed, and इतना grasping हुआ दुखद वेदना का कि I have not been able to recover since yesterday evening. So this has been very difficult. Thank you for sharing. आप लोगों ने जो ध्यान दिलाया है इसके अनित्य स्वभाव की ओर, वेरी परफेक्टली ट्रू। आई रीड आउट टू यू। मैंने कुछ सूत्र सेलेक्ट किए हैं जो इस संदर्भ में हमारे को क्लैरिटी देंगे। दे डिफरेंट स्पोकन अंडर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट काइंडली ट्राई टू सी ए कॉमन थ्रेड इन देम है। एक है संयुक्त निकाय में 45.165, वेरी स्मॉल सूत्र, टाइटल्ड दुख, दुखता। रीड आउट इन पाली क्योंकि शाखा आराम से समझ में आ जाएगा। तिस्सो इमा भिक्खवे दुखता, 3 प्रकार के दुख होते हैं मुक्षु। कथमा तिस्सो, कौन से 3? दुख दुखता, संखार दुखता, विपरिणाम दुखता। पहला हुआ सफरिंग विच इज इनहेरेंट इन पेनफुल फीलिंग। दूसरा सफरिंग इनहेरेंट इन कंडीशंस, संखार। तीसरा सफरिंग इनहेरेंट इन सेसेशन, इन चेंज और इन पेरिशिंग, इसने ट्रांसलेट किया। ये 3 प्रकार के दुख भगवान उसमें बताते हैं, और इनके त्याग के लिए क्या करना चाहिए? 8-fold पार्ट डेवलप करना चाहिए। वेरी पिथी काइंड ऑफ sutta. So what does it refer to? Dukkha dukkata obviously refers to the unpleasant feelings which we feel. वो अपने में ही दुख है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जो विपरिणाम दुख है, it refers to the suffering occurring because of change, जो आप लोगों ने सबने बताया। उसके कई डायमेंशंस हैं। तो इट इज जनरली सीन, अपने जो कमेंटोरियल लिटरेचर है विशुद्धि मंगा में कहा कि दिस रेफर्स टू प्लेजेंट फीलिंग्स, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। इट रेफर्स टू प्लेजेंट फीलिंग्स because they are the cause for arising of pain when they change. विपरिणाम, उसमें परिणाम उसका चेंज हो जाता है। और दिस थर्ड टाइप जो है, जो इसमें सेकंड थी एक्चुअली, संखार दुखता, इज प्रीटी समथिंग यूनिवर्सल। क्या इसका मतलब है? कि जो भी कंडीशनड एग्जिस्टेंस है, कंडीशनड फिनोमेना है, उनका इनहेरेंट नेचर ही अनसेटिस्फैक्टरी है। There's something to be really reflected upon. अलग अलग कमेंटेटर्स ने, आचार्य ने अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। कुछ कॉमनैलिटी भी है, जैसे विशुद्धि मग्गा में और भिक्खु बोधि ने जो कमेंट किए हैं, या उसने उन्हें भिक्खु सुजातो ने, the suffering inherent in the formation has its roots in the imperfectibility of all conditioned existence, and in the fact that there cannot be any final satisfaction within the incessant turning of the wheel of life. It's a very powerful statement, no? And this is what is really the key thing which will motivate us towards liberation. उसके लिए
जनरली कमेंटेटर्स ने कहा कि इट इज रेफर्स टू न्यूट्रल फीलिंग्स, कि न्यूट्रल फीलिंग्स में इस तरह की सफरिंग है, वो पता ही नहीं चलता, हम उसको देखते ही नहीं है, क्योंकि उसको इंडिफरेंस देखते, इंडिफरेंस जुड़ जाते हैं उसके प्रति, क्योंकि हम दुख को समझते नहीं हैं और उससे हमारे को कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो क्योंकि अधिकतर समय फीलिंग्स अदुखद असुखद होती हैं, तो हम दुख का अनुभव ही नहीं करते उस सेंस में। तो ये हमारी संज्ञा पर डिपेंड करेगा, किस तरह से हम उसको देख रहे हैं, कि हमारी संज्ञा, हम कहते हैं सब्बे संखारा दुक्खा थे, दैट इज द पॉइंट बीइंग मेड हियर। संखारा दुक्खता, कंडीशनड एग्जिस्टेंस की नेचर ही ऐसा है, कंडीशन बदल जाएंगे, और जब बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंडेंट हो तो उसको, उस सुख की अनुभूति के साथ साथ दुख से चलता ही रहेगा। कल मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था तो मुझे ख्याल आया, जैसे बहुत एक परिस्थिति है सुखद, घर पे कोई फंक्शन करना है, या पास्ट का देखें तो, या फ्यूचर का है, पास्ट का देखें तो शादी करनी थी बेटे की, very pleasant situation. Mind is in generally in a pleasant feeling. Mental feeling is pleasant. But in the process of doing that, there's so much of suffering, my God. So much of suffering. Because so many people are involved. So many conditions are required for its satisfaction. उस दिन किसी कारण से शहर में कर, वहाँ उस एरिया में जहाँ मैं जाना था, वहाँ पे सेक्शन 144 लग गया. How did you? What do you do? Then some people got upset. We didn't get the due priority. Some people got late. We had to wait for them. So when I reflect, I could see that in that whole process of mental pleasant feeling, constantly because of conditions, something or the other would change and would create a suffering. And during that marriage and after the marriage, every time throughout, you can, I'm sure, आप लोगों ने भी अटेंड की होगी, अगर करी नहीं होगी बच्चों की तो you would have known. A pretty pleasant situation of that kind leads to so much, because conditions, many people, many conditions are involved. We don't know say people, many conditions are involved in that. It's a very gross example, but मुझे लगा काफी strong example है जो हमें समझ में आता है कि वर्ल्डली डोमेन में कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी प्लेजेंट काम हो, उसमें इनहेरेंट है वो सब. That's the sankhara dukkhata, the most profound of the sub, which is unavoidable, which is always going to be there. Whether it is pleasant, whether it is a neutral feeling, this is always going to be there. So this to me seems to be the most crucial part of our understanding of dukkha. So when we have really developed that deep sanya of that kind, sankhara, sabbe sankhara dukkhati, if you have really developed that, जो हम chant करते हैं, then naturally, it doesn't mean कि pleasant sitting है तो हम उसे भागने शुरू कर देंगे, but we know it's uncertain. It's going to change any moment and create complications. If it has not happened till now, it will happen sometime or the other. There's another sutta. वो काफी straightforward है, so I don't have to speak much. It is संयुक्त निकाय 36.5. दट्ठब्बा, इसको देखना चाहिए. तो पहले तो वही डिस्क्राइब करते हैं, 3 तरह की फीलिंग्स हैं, उनको आपको देखना चाहिए. एंड कैसे देखना चाहिए? That is very amazing. Pleasant feeling, bhikkhu, should be seen as painful. Painful feeling should be seen as a dart. Dart मतलब एक त्रिशूल की तरह आपको चिप रहा है. Neither pleasant nor painful feeling should be seen as impermanent. That is the way we should see them. Then he says, when a bhikkhu has seen pleasant feeling as painful,
painful feelings as dart, and neither painful nor pleasant feeling as impermanent. He is called a bhikkhu who sees rightly. And then he tells us indirectly कि उसका implication क्या है. He has cut off craving. क्योंकि pleasant feeling से craving जाती है. जब उसके प्रति craving हम छोड़ देंगे तभी ये संभव होगा. So it is inherent in it कि अगर आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो उसके प्रति craving कम हो जाएगी. And that is the path to freedom. We know that. तन्हा जितना कम होता चला जाएगा. तन्हा का जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूप है, जो सेकंड नोबल ट्रुथ में आता है, वही आता है कि प्रिय की चाह, सुखद अनुभवों की तलाश. That is what our whole life is geared towards. As he has cut off craving, severed the fetters, and by completely breaking through conceit, he has made an end to suffering. He says you'll achieve the complete liberation by that. That's the. Then another sutta, Anguttara Nikaya 9.34, Nibbana Sukh Sutta. इसमें Sariputta is giving a talk, and he says, सुखमिदम आउसु निब्बाना. मित्रों, ये सुख निब्बान बहुत सुखकारी है, अत्यंत सुखकारी है. And again he says twice, सुखमिदम आउसु निब्बाना, out of joy. तो वहां पे एक और भिक्षु है उदयी, तो वो कहते हैं आपने अभी बताया कि निब्बान में कोई वेदना ही नहीं है. सुखम यदेत्था नत्थि वेदयतम, उसमें वो सुख वेदना ही नहीं है, तो फिर सुख किस बात का है? And what does he reply? The fact that there nothing is felt is precisely what is blissful about it. Which means anything which is felt is of the nature of suffering. Unfortunately, हमारी बुक में भी वो डायमेंशन मिसिंग है. चांटिंग बुक में आपने देखा होगा, अनिच्छा है और अनत्ता है, दुखा नहीं. 5 खंडों के बारे में दुख की बात नहीं कही गई है. जब भी हम चांट करते हैं, रूपं अनिच्छं, वेदना अनिच्छा, संज्ञा अनिच्छा, संखारा अनिच्छा, विज्ञानं अनिच्छं, then we go to anatta. We leave aside the dukkha part. Just a bit unfortunate. That's actually the key thing. क्योंकि जब तक हमको उसके दुख स्वरूप को नहीं देखेंगे, we'll not be motivated to work for freedom from them. Why should anybody work for freedom from pleasant feelings? Why should he work? एक और सूत्र है जो संयुक्त निकाय में 36.1, उसका टाइटल इंटरेस्टिंगली समाधि सूत्र. इसमें जो वर्स है, वर्सेस वाला लास्ट पोर्शन में लिख रहा हूँ, which is something which we must have heard many times in Vipassana retreats. I'll just recite, आपको याद आ जाएगा. समाहितो संपजानो बुद्धस्सतो बुद्धस्य सावको वेदना च पजानाति वेदनानंच संभवं यथा चेता निरुद्धन्ति मग्गंच क्षयगामिना वेदनानं खया भिक्खु निश्चतो परिनिव्यते. वेदनाओं का क्षय होने पे जो भिक्षु है वो सैशिएट हो जाता है और परिनिब्बान को प्राप्त करता है. दैट इज द निरोध समापत्ति की जो बात करते हैं. निरोध में हम क्या कहते हैं? अविद्या निरोधो, संखार निरोधा, संखार निरोधो, विज्ञान निरोधा, विज्ञान निरोधो, नाम रूप निरोधा, नाम रूप निरोधो, षडायतन निरोधा, षडायतन निरोधो, फस्य निरोधा, फस्य निरोधो,
Vedana nirodha. Vedana nirodho, tanha nirodha. That is what is being said. That is the experience of Nibbana being described. I hope this establishes gives some food for thought for us to reflect on. और सूत्र भी है सूत्र निपात में 3.12 द्वैतानुपස්සना sutta, very powerful sutta. It is very great insights actually. It should be read by us whenever we get time. Small but very powerful. उसका मैं translation पढ़ रहा हूँ सिर्फ. Whatever stress comes into play is all from feeling as a requisite conditions. तन्हा जो है feeling से जागती है. This is one contemplation. From the remainderless fading and cessation of that very feeling, there is no coming into play of tanha. This is the second contemplation. For a monk rightly contemplating this duality in this way, because Advaita ka matlab duality hai, heedful, ardent and resolute, one of the two fruits can be expected. Either arahantship here and now, or if there is any remnant of clinging, anagamita. So see the power of this reflection. If you can really deeply imbibe this, you'll be free. इतनी बड़ी बात कही जा रही है इसमें. So let us spend some time reflecting on this and keeping in view the feelings which we noticed arising, passing away in various videos and in our own life, preferably in our own life. If you remember some event, पिछले अपने जन्म का कोई अपने इस लाइफ स्पैन का जो एक्सपीरियंस हो उसको रिमेम्बर करके देखें कि क्या प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस में हम देख पाते हैं ये. So we'll spend a few minutes doing that contemplation quietly.
We could recall any past very pleasant event or occurrence in our life and see whether it was purely pleasant or whether some tinge of unpleasantness was always accompanied by that. Because that's the one which is the real trap in which we all fall, and which is taking us around this samskara, sansara again and again and again. So, read out in verse form, Pali verse मुझे थोड़ी अच्छी लगता है तो पढ़ता हूँ आपको. We will also get the meaning. Yo sukhang dukkhato adda dukham addakhi sallato adukham asukham santang addakhi nang anicchato. Save sammadasso bhikkhu parijanati vedana so vedana parinyaya ditthe dhamme anasavo kayasya veda dhammatto sankhyaṃ nopeti vedavu. जो सुख अनुभव को दुख मान समझता है, दुख के सदृश देखता है और दुख को एक भाले चुभे हुए भाले की जैसे. और ये मोस्ट क्रूशियल है, जो अदुखद असुखद और शांत फीलिंग को अनित्य देखता है, वही भिक्खु सम्मदर्शी है. वो भी ठीक से देख पा रहा है और वेदना को ठीक से समझा है. उसने धर्म को ठीक से देख लिया है और वो अनासव हो गया है. और काया के भेद पे जब काया टूटेगी मृत्यु के क्षण में, वो उसकी विज्ञान जो है, उसकी जो चेतना है वो कहीं नहीं जाएगी, मतलब वो मुक्त हो जाएगा. उस जो कहाँ गया वो, उसकी कोई संख्या नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते वो कहाँ गया. वेदनाओं को ऐसा ठीक से समझने वाला, मतलब जानने वाला है. यहाँ पे वेदगु का मतलब है वन हु नोज द थिंग्स प्रॉपरली, वन हु इज नॉलेजेबल. So that is the power and the most. आप अगर विचार करके देखेंगे, सारा जीवन हमारा सुख की तलाश में गुजरता है और उस सुख की तलाश के कारण ही बारंबार बारंबार हमारे repeated births are happening. And the most obvious manifestation of that is pleasant feelings, physical or mental, which trap us. You say anicca, anicca, anicca. कहने से नहीं कुछ होगा. You have to really realize them to be by deep reflection. In various ways, remembering our past experiences, seeing the, looking at future things, looking at the way we have been going through our life, especially for people like me who have lived long, various kinds of experiences. If you look at them, there's hardly any experience. There's just none experience really, which has been unmixed pleasant feeling all the time. No? Never. So ये transformation हमारी संज्ञा में, this is so crucial, which is based on understanding of the Vedana. Good. So if anybody has anything to ask or come or to share based on reflection, तो 2-4 मिनट ही रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहे तो वेलकम. जी, कल शाम को जो मैंने आपसे शेयर किया था कि जब मेरा 12 साल पहले ग्रैंडसन पैदा हुआ था, तो हॉस्पिटल में जब बेबी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत ही एक सुखद या प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा. उसमें दुख ढूंढने में मुझे काफी कंटेम्पलेट फिर दोबारा मैंने किया कल शाम को, तो लगा कि उसमें जो दुख हो सकता है, आप इसके ऊपर
मुझे एनलाइटन कर सकते हैं कि मुझे एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी, एक अत्ता भाव शायद कहीं स्ट्रांग हो गया, इसके अलावा तो मुझे कहीं और दुख उसमें दिखा नहीं। That's one has to really learn to reflect in a varieties of ways. आपको याद होगा अजान शाह बार बार कहते थे अपने प्रवचन में, हमने सुना है जो इतनी लंबे समय तक सुने प्रवचन, कि भाई लोग मृत्यु पे क्यों रोते हैं, अगर रोना है तो जन्म पे रोना चाहिए, क्योंकि कोई नया प्राणी आ गया बेचारा फिर सारे दुख के चक्कर में फंस गया फिर से. That's it. Very powerful contemplation. We have read it so many times in Ajahn Chah's book. So now that's for contemplation. It doesn't mean कि हम वहाँ पे रोना शुरू कर दें, but we understand that birth by itself is not a great thing. It's actually beginning of the whole life of suffering. The whole process of being born is suffering. The parents who are going to look after him will have to experience a lot of hardships. And the child itself is actually getting reborn. Getting reborn is not something wonderful. But सामान्य जो हमारी संज्ञा है उसके हिसाब से बहुत अच्छी बात मानी जाती है. उस पर अगर हम एक धर्म की दृष्टि से विचार करें, जाति भी दुक्खा, जाति is the cause of everything which follows. It's a matter of reflection. Deeper, जितना हमारा reflection गहरा होगा उतनी हमारी ये संज्ञा strong होगी, दुख संज्ञा. Yes, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद, आप कुछ कहना चाहते हैं? Thank you for the other side, other version. Thank you, Professor, for a wonderful exposition again. In fact, I have an observation and a question. जी. Observation is कि जो आप कह रहे हैं वो, if I look back at my life, I can see so many experiences, practically every one, which was pleasant, which eventually was not that great. It became outright unpleasant in some cases, and certainly not. आप थोड़ा माइक से पीछे हो जाएंगे, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही. Probably you are too near the mic. Maybe I'll just take off my headphones. Is that better now? हाँ जी, it's very clear now. Okay. So what I was saying was that if I look back at my life, I can see so many situations where pleasant experiences didn't last long. They eventually became either not so great pleasant experiences or outright unpleasant experiences. So anyway, that is a matter of hindsight, and that's something that is not very difficult for any of us to see if we want to see that. In fact, right now when you're talking about these suttas and their exposition, there was a very pleasant feeling in the mind, listening to all these suttas. But at the same time, there was this feeling that this is not going to last long. This is going to go away. So this was an observation that I just wanted to share. Yeah. The question I have is the relationship between first Vedana is so automatic that without cessation of first, Vedana cannot cease. And therefore, जो निब्बाना में जो बात हो रही है, essentially it requires us to basically take us to Nirodha, first Nirodha. जी. And in fact, भगवान के कई सूत्र में he traces back the problem to first. And then what comes to my mind is that first can only not be there if you're not born. If there is, because if you are born, if you are conscious, then first will be there in some form or the other. The other
other thing that he offers is that the Eightfold Path is the way out. So that's a slight question mark in my mind. The Eightfold Path also, as long as you are practicing it as a sentient human being, will not really lead to cessation of first in that sense. So that's a doubt I had, which I thought Cessation of us will not happen only after we are dead. It is when does this cessation happen? When avidya nirodho. When ignorance is totally abolished, then the whole paticca samutpad cycle stops. So the experience of nibbana is of a person during this very life. And therefore, the experiences of that kind will mean basically कि अविद्या छूट जाए हमारी जितनी जो तन्हा की जो टेंडेंसीज हैं, तो आप कह लीजिए चार आधे सत्य ठीक से समझ आ जाए. अविद्या का मतलब हमारी दृष्टि सम्यक हो गई, सम्मा दृष्टि हो गई. So avidya is gone. What is the avidya? Not understanding suffering, isn't it? That is the basic thing which is said. दुखे ज्ञानम दुख समुदय ज्ञानम. दुख का ज्ञान नहीं है तो अविद्या है, दुख समुदय का ज्ञान नहीं है तो अविद्या है. So the key factor therefore is that the understanding कि सुख की तलाश दुख का कारण है, और इसको हम बुद्धि के स्तर पे समझ के अनुभव के स्तर पे वेरीफाई करके बार बार we ultimately becomes a part of our default mode of thinking. संज्ञा का जो स्कोप है वो मेमोरी का भी है, याद भी रहने का स्कोप है. So संज्ञा becomes पन्या when such crisp teachings are remembered, and whenever such experiences come, this comes to the mind, and we don't, the tendency to crave for them, tendency to grasp them immediately falls down. ये हमारे अभ्यास करते हैं, हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो बेसिक फैक्ट है, seeing pleasant feeling as painful, it's a very so counterintuitive thing, you know. क्या कह रहे हो भाई, pleasant feeling को painful कैसे देखेंगे? That's the reason that we understand it as viparinama dukkha, sankhara dukkha. Once we understand it in that manner and do it again and again and again, then we create an alternative mode of thinking in our mind. And as it becomes strengthened and strengthened, ultimately, after all, अनित्य संज्ञा भी कैसे डेवलप हो रही है? हम बार बार अनुभव को देख रहे हैं, अनित्य अनित्य अनित्य, and eventually it becomes a part of our thinking. It becomes a part of our evaluation. Perception हमारा part ही हो जाता है. जो भी arise हुआ अनित्य भाई, ठीक है, pleasant है, unpleasant है, neutral है, but है तो अनित्य ना. So once that becomes so strongly strengthened, then we say we are getting established in Dhamma. That's all. What else is it? right. Basically, cessation of first here refers to cessation of avidya. Yeah. Removal of avidya. Yeah, that's right. Yeah. That's right. Thank you. Good. Thank you very much. Thanks to all for contributing. और कोई और कुछ input देना चाहें, you're welcome. सर आपने जो अजांचा वाला जो स्टेटमेंट दिया, इट्स ट्रूली सटल प्रोफाउंड. अगर हम नॉर्मल लोगों को ऐसा बात बोल देंगे तो बोलते हैं कि क्या मनहूसियत वाली बात कर रहे हैं. Yeah. दैट इज ट्रूली. You have to be careful not to say it to people who are not understanding the माने तो मुश्किल हो जाएगी. Real दुख आ जाएगा. Yes. I mean, I can go on over this, like, yeah, so much of, you know, साफ दिख रहा है इस समय तो within our country there is so much problem out of this man-made problem, not just that. So thank you so much, sir. thank सर you. इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी. हाँ बोलिए ना. सर जैसे अभी आपने बताया कि जैसे मैं ना इन चीजों को पहले देखती थी, कभी कहीं पे कोई जन्म हो रहा है तो ऐसे लगता था कि हाँ
कि मतलब सब हँस रहे होते थे, तो मैं उनको देख के ऐसे लगता था कि ये लोग क्यों हँस रहे हैं? इसने अब ये आ गया जन्म लेके कि इसने अपने कितने दुखों को झेलना है। सर इसी तरीके से ना मेरे को एक चीज़ में और आता था, क्या ये सही है प्लीज़ बताइएगा, कि जब किसी की शादी हो रही होती है ना मेरे, तो तब भी मैं उसे ऐसे ही देख रही होती हूँ कि एक नए दुःख में पड़ने जा रहा है। Yeah, तो that's true. ये जी, तो मुझे सब जैसे मेरे साथ हस्बैंड होते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नाच रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये मतलब अज्ञानतावश नाच रहे हैं, और ये जो शादी करने जा रहा है इसे अभी सुख दिखाई दे रहा है, अभी कुछ ही दिनों में इसे वो दुःख दिखाई देगा सब कुछ जो स्टार्ट होने वाला है। Yeah, तो but all this should be kept to us. That's very उसको आप बस बाहर करेंगे तो फिर आपको इमीडिएटली दुख मिल जाएगा. जी So you have to be wise in doing it, ना? You have to be wise, very wise. मुझे इन लाइटर वेन मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है. मैं विपश्यना से पहले स्वामी सनातन श्री के संपर्क में था काफी, बहुत इंटेंसली हम लोग जाए थे उनके आश्रम में. तो एक बार हम जा रहे थे तो एक उस पे गाड़ी उनके आगे वो चला, तो खुद ही एक जीप चलाते थे, उनके आगे गाड़ी जा रही थी किसी शादी वाले की. उस पर लिखा हुआ था एक्स वेड्स वाई. तो कहते वो जो वेड्स है ना उसको हिंदी में पढ़ो. मैंने क्या वो तो वध हुआ. कहते बस यही हो रहा है एक्चुअली. स्वामी जी क्या कह रहे हो? कहते उसको कहना मत, मतलब एक्चुअली तो वध ही हो रहा है वहां. So we can see that. Of course, many of us are married, so it's not not to share with everybody and get into trouble. Okay. थैंक यू सर. Okay. चलिए. तो बात मुझे अभी भी याद है, पर it's more than 40 years. No, truly, sir. I mean, real wisdom is needed on all these things. Like these two topics we discussed. Truly, some deep wisdom is needed. They are not absolute statement, but definitely, sir, बहुत ज़्यादा wisdom चाहिए. आप म्यूट पर हैं सर. In the light of our own experience, तब वो हमारे इंटरनलाइज होंगी. वो सुनने सुना से इंटरनलाइज नहीं होती. When we reflect on our own experience of our own life, we can see it happen. हमारे यहाँ बच्चे भी उत्पन्न हुए हैं और हमने देखा उसकी परिणति क्या हुई है. दूसरों के यहाँ भी देखी है. हमारी शादी हुई, हमने उसका भी देखा है परिणति क्या हो रही है. So we all know it, but we don't have to be so untactful as to keep on advising and admonishing others about it. That should never be done. It is as a sadhak को हमको बहुत tact सीखना चाहिए that what we learn is for ourselves and we don't need to distribute it to others unasked for. That's very important. राइट सर. नहीं सर, मेरा पॉइंट था कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है टोटली शादी या बच्चे, बट उसमें क्या उसमें गलत अविद्या की तरीके से फॉलो हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है. अगर उसको विद्या की तरीके से करेंगे तो मे बी सम सेंस कुड बी मेड आउट. We have to send that. अगर हमारे माता पिता ने शादी नहीं की होती तो हम कहाँ होते हैं? ये तो हार्ड फैक्ट. हम आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. That is the result of lust of our parents that we are here. So we have to recognize that part also. But since we are trying to work on the path to liberation, then we have to recognize that also. It's not that is wrong and this is right. The issue is what are we looking for? If you are looking for worldly happiness, fine, that is very good. Having a family is a means of getting some worldly happiness. But we know that is not the end of it. The worldly happiness or even jhanic happiness, they are all sankhara dukkha khanda. They are within the conditioned realm. Even dhyana happiness is conditioned realm. So it is ultimately gives up. It is not satisfactory in the same sense as the sankharupekha, as tanha khaya. They are of a different kind. So थोड़े अनुभव जब हमें दुख निरोध के अनुभव होते हैं तो we know that they are of a totally different kind. So that is our education. वो हमको बार बार अपने को educate करना है. तो हम अपने को, and it doesn't mean कि हम we start despising people because they are getting married or a child is born and we start telling others कि क्या हो रहा है, तुम क्यों खुशी मना रहे हो. No, not at all. That's fine.
That's fine. Yeah, right. If they can help each other on the spiritual path, that's fine. Only if you give a food to a person who is not hungry, you're going to harm him. You have to understand that. So, 2 years back, our grandson was born. I didn't go and tell my son, "Ye to tumne kya kar diya?" We don't have to do that. We'll celebrate his coming into this world. That's okay. That's a convention. Yeah. We would see that. But as good meditators who are looking for liberation, we know, we have in our own mind a picture of that. And yet, in the conventional world, we'll behave according to the conventions. बहुत आवश्यक है. नहीं तो एक arrogance आ जाती है, एक subtle arrogance आ जाएगी, which will take us down the hell again. It's very, very important that the understanding should lead to humility, not arrogance. Right, sir. गड़बड़ हो जाएगी ना? And not looking down upon others, but having compassion heartily, and trying to develop ways and means of helping others to follow that path. Those who are your own near and dear ones. But that's very, very tactful thing. That is not given to everybody to do that. It's very difficult. Right, sir. Somehow this reminds me of the statement that opposite of great truth is also true. Yeah. They have their own validity in their sphere of and domain. They have their own validity.